Welcome everyone in the class of statistics. In this video lecture, we will learn testing of hypothesis about two population variances. इससे पहले हमने जितने भी hypothesis testing के procedure सीखे हैं, उसमें हमने hypothesis testing सीखी है about single population mean, about single population variance, about two population means, about two population proportions, and single population variance. But sometimes we need to compare the variance of two types of populations. हमें दो तरह की populations की variance compare करनी पड़ती है. And this is required in the area of quality control. Quality control का जो area है वहाँ पर hypothesis testing का बहुत रोल होता है. इस तरह की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जहां पर दो तरह की पॉपुलेशंस की वेरिएंस हम कंपेयर करते हैं, ये कैसे यूज होती है इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी. मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो दो तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है दो तरह की मशीन से. तो जो बैचेस मिल रहे हैं दो तरह की प्रोडक्ट्स के, उन बैचेस में कितनी वेरिएबिलिटी है प्रोडक्ट्स में, दे वांट टू टेस्ट दिस. वेरिएबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि दोनों मशीन्स में से कोई एक कंसिस्टेंट नहीं है, दोनों मशीन्स कंसिस्टेंट नहीं है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द सेम आइटम्स अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो. इसी तरह से स्टॉक मार्केट का जो एरिया है, अगर किसी शेयर में, किसी पर्टिकुलर शेयर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप उस शेयर की वेरिएबिलिटी चेक करो अगर, तो उसमें अगर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसकी प्रॉफिट में और लॉस में, जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कभी कभी बिल्कुल लॉस में जा रहा है, वेरिएबिलिटी इज मच मच हायर, तो वहाँ पर मनी इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है. तो ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हमें दो तरह की पॉपुलेशंस की वेरिएंस कंपेयर करने की ज़रूरत होती है. या मान लीजिए स्टॉक मार्केट में ही दो तरह के शेयर में अब आप देखना चाहते हैं कि किस शेयर में बेटर है मनी इन्वेस्ट करना, या तो उसके लिए यू कैन कंपेयर द वेरिएबिलिटी. जिसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी उसमें मनी को इन्वेस्ट करना ज्यादा रिस्की होगा एज कंपेयर टू द अदर. सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब हम दो तरह की पॉपुलेशन की करते हैं वेरिएंस की, तो यहाँ पर हम दोनों पॉपुलेशंस की सैम्पलिंग करते हैं हम दोनों पॉपुलेशन से और सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं. तो मान लीजिए आपके पास दो तरह की पॉपुलेशन है, एक है पॉपुलेशन नंबर 1, ये पॉपुलेशन नंबर 1 है और ये पॉपुलेशन नंबर 2 है. ओके, तो आप पॉपुलेशन को तो नहीं देख सकते, तो हम पॉपुलेशन से सैम्पलिंग करते हैं. हम सैंपल को देख सकते हैं एज अ होल. तो सैंपल किया, ये मान लीजिए इस सैंपल की जो वेरिएंस है वो S1 स्क्वायर है और इस सैंपल से जो हमें वेरिएंस मिली है वो S2 स्क्वायर है. तो हम ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं जिसे हम कहते हैं S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. इस रेशियो की वैल्यू हमें 1 कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि चाहे सेम पॉपुलेशन से ही आप दो सैंपल क्यों ना लें, वो दोनों सैंपल डिफरेंट होंगे. ये सैंपल के एलिमेंट जो होंगे वो इस सैंपल के एलिमेंट से डिफरेंट होंगे. तो S1 की वैल्यू, S1 स्क्वायर की वैल्यू और S2 स्क्वायर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आती है, वो हमेशा डिफरेंट होती हैं. तो इस वजह से ये जो रेशियो है हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देता है. तो ये वैल्यू अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स पेयर के लिए बार बार कैलकुलेट करें इस रेशियो की वैल्यू, तो हमें एक तरह का और फिर इस वैल्यूज को अगर हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस पर वैल्यूज ले लें और वाई एक्सिस पर उनकी प्रोबेबिलिटी ले लें, तो हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है उसे हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. तो इसलिए हम इस रेशियो को इक्वल टू रखते हैं एफ के, कैपिटल एफ के. तो ये जो रेशियो है, अगर आप इस रेशियो को
डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स के लिए बार बार कैलकुलेट करोगे तो आपको जो शेप मिलेगी डिस्ट्रीब्यूशन की वो कुछ इस तरह से मिलेगी। जब आप उसको ड्रॉ करोगे तो ये काई स्क्वायर की तरह ही दिखती है। तो इसे एफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और इसकी शेप डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ चेंज हो जाती है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम दो तरह की होती हैं, इसमें पेयर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम S1 स्क्वायर से एसोसिएटेड होती है और दूसरी S2 स्क्वायर से एसोसिएटेड होती है। इसे न्यू 1 बोलते हैं, दिस इज न्यू 2, और इसकी वैल्यू होती है N1 - 1 और इसकी वैल्यू होती है N2 - 1। तो N1 सैंपल 1 का साइज है और N2 सैंपल नंबर 2 का साइज है। तो F की जो टेबल होती है, जो आपको टेबल्स मिलेंगी बुक्स के पीछे, उसमें राइट टेल का एरिया और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिग्री 1 न्यू 1 एंड न्यू 2 के लिए F की वैल्यू गिवन होती है। क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं होता है इसलिए लेफ्ट टेल और राइट टेल, इसे वैसे हम अपर टेल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अपर टेल, एंड दिस हियर द टेल इज कॉल्ड द लोअर टेल। तो अपर टेल और लोअर टेल सिमेट्रिक नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ द नॉन सिमेट्री ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, और ना ही इसका मीन जीरो होता है जस्ट लाइक एज जेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो वैल्यू यहाँ पर होती है, और क्योंकि ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं एफ की, तो यहाँ पर हमेशा आपको दो पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी। ये वैल्यू डिनोट की जाती है, अगर मान लीजिए ये एरिया अल्फा है तो दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय एफ अल्फा न्यू 1 न्यू 2। और ये अगर ये एरिया अल्फा बाय 2 ले लेते हैं मान लीजिए, तो ये हम डिनोट करते हैं, ये अल्फा बाय 2 है अगर, तो इसके राइट का एरिया 1 - अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो हमेशा हम राइट का एरिया लिखते हैं, राइट साइड का 1 - अल्फा बाय 2 कॉमा न्यू 1। इसका नोटेशन ये हो जाता है। इन दोनों में रिलेशनशिप होता है एक तरह का एफ अल्फा बाय 2, क्योंकि हमें टेबल में केवल राइट टेल के एरिया के लिए ही वैल्यूज गिवन होती हैं, और राइट टेल का एरिया ज्यादातर हम 10% या 5% या 5% का हाफ 2.5%, और या फिर आप ले सकते हो 0.5%, ये लेते हैं। तो जब आप राइट साइड का एरिया लोगे तो वो इन एरिया से काफी ज्यादा होगा। तो टेबल में राइट टेल इस वैल्यू इन वैल्यूज को निकालने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। केवल राइट टेल का एरिया के लिए हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एरिया इतना होता है केवल। तो अगर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दिस वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस वैल्यू by just doing the reciprocal of this value like this। तो जस्ट आपको इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी था। तो अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो आपको हमेशा से ही मैं बताती आ रही हूँ, स्टेट नल हाइपोथेसिस। स्टेप नंबर 1, स्टेट नल हाइपोथेसिस। अब ये नल हाइपोथेसिस किसके बारे में स्टेट करेंगे आप? क्योंकि हम दो पॉपुलेशन की वेरिएंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम नल हाइपोथेसिस में ये
रखेंगे कि both the populations have no difference, they are same. Okay. Next step is state alternative hypothesis. Alternative hypothesis is always denoted by H1, and this, if we want to test whether the two populations have same variance or different, then we put this sign. If we want to, if we have suspect that population number one if have more variance than second population, then we do this, we put this alternative hypothesis. In this case, we apply two-tailed test. This is two-tailed test, and this is right tail test. If we suspect that variance population number one have less variance than population number two, then we check this, we put this, and this is left tail test. And you know that when we apply two tail test, there are two critical areas. One is in the upper tail, another is in the lower tail, and level of significance is divided into two parts. One half part is for upper tail critical area, and another left half is for left tail critical area. In right tail test, the critical area lies in the upper tail, and in left tail test, critical region lies in the lower tail of the distribution. Okay. Step number 3. Step number 3 is set label of significance, that is alpha. Step number 4 is compute the value of test statistics. That is टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कैलकुलेट करेंगे हम इसमें f, which is equal to s1 square upon s2 square. और यहाँ पर हम ये कंडीशन रख रहे हैं कि s1 square should be greater than s2 square. अगर s2 की वैल्यू ग्रेटर आती है s1 से, मान लीजिए, तो then you take s2 square upon s1 square. Okay, and new one is degree of freedom corresponding to sample variance S1 square, and new two is new one is degree of freedom corresponding to the sample whose variance is S1 square, and new two is degree of freedom corresponding to sample whose variance
इज S2 स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप S1 स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है S2 स्क्वायर से, तो न्यू 1 आप उस सैंपल से कैलकुलेट करेंगे जिससे आपने S1 स्क्वायर कैलकुलेट किया है, और न्यू 2 उस सैंपल से कैलकुलेट करेंगे जिससे S2 स्क्वायर कैलकुलेट किया है। अदरवाइज इफ मान लीजिए अगर S2 स्क्वायर ग्रेटर है S1 स्क्वायर से, देन यू फाइंड you calculate the value of f as S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, और फिर आप न्यू 1 क्या लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू S2 स्क्वायर, यानी कि जिससे आपने S2 स्क्वायर कैलकुलेट किया है उस सैंपल से आप न्यू 1 फाइंड आउट करेंगे। तो कहने इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जिस सैंपल के कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल वेरिएंस ग्रेटर होती है उसी सैंपल से हम न्यू 1 कैलकुलेट करते हैं। ओके, so this ratio follows F distribution, and underlying assumption before applying this test is that the population from which sampling is done is normally distributed, both the populations। ये जरूरी है। Step number 5। Step number 5 is find or calculate। You need not to calculate, you have to just find critical value using F table and label them in the figure। फिगर में आपको क्रिटिकल एरिया भी लेबल करना है, एक्सेप्टेंस एरिया भी लेबल करना है। ओके, अगर आप टू टेल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, देन अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इक्वली। one is for upper tail and other is for lower tail। If you are applying one tail test, then alpha doesn't divide into 2 parts। Okay, suppose you are applying right tail test, then area of right tail will be equal to alpha। If you are applying left tail test, then area of left tail will be equal to alpha। And in the last step, compare critical value of f with calculated value and take appropriate decision। Okay, so now we do one example to understand the whole procedure। Suppose a machine produces metal sheets। मशीन है जो मेटल शीट्स प्रोड्यूस करती है, और उन मेटल शीट्स की जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज 22 मिलीमीटर्स। ओके, इतनी थिकनेस की शीट प्रोड्यूस करती है मशीन। अब
because of machine or some other factors or manufacturing environment or raw material, किसी की भी वजह से मान लीजिए मेटल शीट्स में की जो थिकनेस है उसमें वेरिएबिलिटी आ गई है। दो तरह की मशीन है हमारे पास जो ये शीट्स प्रोड्यूस कर रही हैं फैक्ट्री में। ओके, तो जो ऑपरेटर्स हैं दे आर concerned about the consistency of these two machines, कि दोनों machines सही तरीके से वर्क कर रही हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें शीट्स की थिकनेस में वेरिएबिलिटी मिल रही है। दो मशीनों से ये शीट प्रोड्यूस होके आ रही है, तो अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी मशीन से मतलब शीट्स की वेरिएबिलिटी ज्यादा मिल रही है। तो दो तरह की मशीन है, हमें दोनों की कंसिस्टेंसी चेक करनी है केवल। तो मशीन 1 से मान लीजिए 10 शीट्स का एक सैंपल लिया गया और मशीन 2 से 12 शीट्स का सैंपल लिया गया। और ये जो 10 शीट्स का सैंपल लिया गया है, इनकी जो थिकनेस है मशीन नंबर 1 से जो 10 शीट्स मिली हैं उनकी जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज 22.3, 21.8, 22.3, 21.6, 21.8, 21.9, 22.4, 22.5, 22.2, 21.6। ओके, और जो सेकेंड मशीन से जो 12 शीट्स ली गई हैं उनकी जो थिकनेस है दैट इज 22.0, 22.1, 21.8, 21.9, 22.2, 22.0, 21.7, 21.9, 22.0, 22.1, 21.9, 22.1। okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, and these are 10. So assume that here the populations of sheet is normally distributed, जो thickness है sheets की that is normally distributed. Now we want to test or determine whether the variance of from each variance of the populations have is same or different, okay, through sample. तो दोनों पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि दोनों पॉपुलेशंस की वेरिएंस डिफरेंट है या सेम है। अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली किसी एक से वेरिएबिलिटी ज्यादा मिल रही है, किसी एक से वेरिएबिलिटी कम मिल रही है। और अगर सेम है तो वेरिएबिलिटी में कोई अंतर नहीं है और दोनों ही मशीन या तो खराब है या दोनों ही मशीन सही वर्क कर रही है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल just in this problem we determine whether the two populations have same variance or different. So we put the null hypothesis as sigma 1 square is equal to sigma 2 square, and here we will write that sigma 1 square is the variance of first population and sigma 2 square is the variance of second population. Then we put alternative hypothesis as this. Then to compute f we need
S1 square and S2 square. So by calculation of S1 square and S2 square, the value of S1 square comes out to be 0.11378, and the value of S2 square will comes out to be 0.02023. This is S1 square corresponding to this sample, and this S2 square is corresponding to this sample. So obviously S1 square is greater than S2 square. So we keep this formula as it is. And the ratio, we substitute these values here so that we will get the value of f as 5.62. Okay. So degree of freedom will be nu 1, which corresponds to this sample. So this is 9, which is equal to n1 minus 1, and nu 2 is 11, which corresponds to second sample, and this is equal to n2 minus 1. This is first step, this is second, third is alpha. We put alpha as 5%. Okay, this is fourth step. Now we find critical value. So to find critical value, this area is, because this is a two-tailed test, so we put half area in left tail and right tails. This area is 0.025. Okay, this area is 0.025. This is a half of 5%. This is called critical region. This is also critical region. This area is 95%. This is acceptance region. Okay, we see in table the value of this value is denoted by 0.025, comma 9, comma 11. 9 is nu 1, 11 is nu 2. तो आप टेबल में देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 3.59, and to find this value, which is denoted by f, you subtract this area from 1, so you will get 0.975, comma 11, comma 9. So we write here 0.975, just the notation. 11, comma 9 is equal to reciprocal of f 0.025, comma 9, comma 11. That is equal to 1 upon 3.59, and that will give you the value 0.28. So we put here 0.28. Once we have found these two values, in the next step we compare the calculated value, which is 5.62, with these two values. So obviously 5.62 is greater than this value, critical value, and this is somewhere lying here.
it is lying in this region. It is falling in critical region. So we will write, since F calculated, which is equal to 5.62, falls in critical region, so null hypothesis is rejected. मीन्स क्या मतलब हुआ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का? नल हाइपोथेसिस हमने ये सेट किया था कि दोनों तरह की जो मशीन्स हैं वो मेटल शीट्स की जो प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी थिकनेस में कोई वेरिएंस नहीं, इक्वल है दोनों की वेरिएंस। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, मींस ऑल्टरनेटिव विल बी एक्सेप्टेड, मींस दोनों की वेरिएंस इक्वल नहीं है। वेरिएबिलिटी है लेकिन इक्वल नहीं है दोनों की वेरिएंस। अब आप फर्दर टेस्ट लगा सकते हो, आप ये चेक कर सकते हो कि वेदर द metal sheets produced by machine 1 have greater variance than the metal sheets produced by machine number 2, or you can check the variance of metal sheets produced by machine 1 have lesser variance than the variance of the metal sheets produced by machine number 2. So this is further test which can be applied, but क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल यही पता करना था हमें कि वेरिएंस डिफरेंट है दोनों की, तो we have put it this alternative hypothesis. This is the whole solution of this problem. We can do one more problem and then we stop the lecture. Suppose there is a country X and another country which is denoted by Y. And here the annual income of the people is $60,000. And here the annual income of the people is $60,000, same annual income. Here the people having the four family members, जिनकी फैमिली में 4 members हैं, they spend more than $22,000 on basic goods and services. जो basic goods and services हैं, bread and butter, उन पर इतने डॉलर से ज्यादा खर्च करते हैं। और another city में they spend only $15,460. अब देखने से तो हमें ये पता लग रहा है कि वेरिएबिलिटी है दोनों के एक्सपेंडिचर्स में, लेकिन we want to test whether the variance of money spent by जो यहाँ के लोग हैं they spend इनकी मनी में वेरिएबिलिटी ज्यादा है as compared to the people of city Y, right? So we can test it at 1% level of significance. आपको इसे 1% level of significance पर टेस्ट करना है। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है कि टेस्ट करने के लिए
सैम्पलिंग की गई है, जिसमें यहाँ से 7 फैमिलीज को चूज किया गया है विद 4 मेंबर्स, और यहाँ से 8 फैमिलीज को चूज किया गया है, और उनसे पूछा गया कि वो एनुअली मतलब कितना स्पेंड करते हैं बेसिक्स चीज़ों पर, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो ये डेटा प्रोवाइडेड है आपको। जो फैमिली नंबर 1 फैमिलीज जो एक्स सिटी से ली गई हैं, उनके लिए जो एक्सपेंडिचर्स हैं बेसिक एनुअली, दे आर $18,500, $19,250, $16,400, $20,750, $17,600, $21,800, $14,750। एंड सिटी वाइज से जो फैमिलीज सेलेक्ट की गई हैं, उनके एनुअल expenditures are as follows: 23,000, 21,900, 22,500, 21,200, 21,000, 22,800, 23,100, 21,300. Okay, so we have to find that whether the variability here is more than variability here. यहाँ पर variability ज़्यादा है as compared to here expenditures में. तो let's start from the steps number 1 as usual. Null hypothesis. Sigma 1 square is equal to sigma 2 square, means there is no variability. Variance of both is equal. Second is alternative, and because we want to test that variability of first sample is greater than variability of the second, means variability of first population is greater than variability of the second, we put here greater sign. मीन्स हमें ये टेस्ट करना है कि इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है इन एक्सपेंडिचर्स में, और इनमें वेरिएबिलिटी कम है. We compute test statistics. So I am not showing the calculation, I'm just writing it directly. This value is 5961428.6, and this value is 737,142.9. The value is 8.09. So n1 is, new one is n1 minus 1, that is 7, क्योंकि फर्स्ट सैंपल में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 फैमिलीज हैं. तो n1 should be
6, right? N1 is 6. Let me correct it. N1 is 6 and N nu2 is N2 minus 1, which is equal to, let's count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we put here 7. Okay. So now we, step number 3 is alpha. Alpha is 1%. It is given in the problem. This is step number 4. Okay. Step number 5 is we draw the critical and acceptance region. Let me use this. Since this is a right tail test, so area of upper tail is totally 1%. Okay. And this critical value here is denoted by 0.01, 6, 7. That comes out to be 7.19 when you see in the table. Let me label the critical region. This area is 99%. This is acceptance region. So now you can compare calculated value and this is critical value. Obviously, this calculated value is coming in the critical region. So null hypothesis is rejected. We will write here, since F calculated, which is equal to 8.09, falls in critical region, and you have to show the figure. You have to show the figure. So null hypothesis is rejected. Means we have to accept the alternative, means the variability of variability in the expenditures of the families coming from the city X, or expenditures of the families in city X have more variability in their expenditures as compared to city Y. So this is the whole procedure of testing of hypothesis about two population variances. इसमें आपको एक assumption हमेशा याद रखनी है, underlying assumption before applying this test, that the populations, both the populations from which sampling is done, is normally distributed. So you have to mention it before applying this test, or if it is given in the question, then there is no problem. Otherwise, you have to state it before solving any numerical problem. Thank you very much. And if you have understood this lecture, like it and share it, and also subscribe my channel to get the notification about any other new videos. Thank you very much.